हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोनू नायक। वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल रिसर्च का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस। Which of the following represents the distinctive features of qualitative research? Option A, perspective based, inductive and meaning giving. Option B, hypothesis based, deductive and testing. Option C, inductive cum deductive based approach and generalization. Option D, deductive inquiry with focus on theory and hypothesis being tested. तो फ्रेंड्स, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च का बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च का फीचर्स में, तब हम हाइपोथेसिस कभी टेस्टिंग नहीं करते। कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होता है। तो ये देखकर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो एक ये क्वेश्चन करने का हम लोग एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोला जाता है, एक मेथड्स है जिसको बोला जाता है डिलीटेशन मेथड। देखो कि फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को डिलीट कर दिया यहाँ, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होता है। तो लेट्स देन कम्स टू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है ना, इंडक्टिव कम डिडक्टिव बेस्ड अप्रोच एंड जनरलाइजेशन। और एक बात है, क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेशन इट इज़ लेस जनरलाइजेबल, क्वालिटेटिव रिसर्च इज लेस जनरलाइजेबल। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। So here we should clear about the features of qualitative research so that we can answer all the questions related to this part. So let's discuss features. Number 1, natural setting. In qualitative research, the researcher tend to collect the data in the natural field where the participants experience the issue or problem under the study. तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में नेचुरल सेटिंग में डाटा कलेक्शन होता है। सेकेंड वन इज रिसर्चर प्लेज इट एज की इंस्ट्रूमेंट। हियर क्वालिटेटिव रिसर्च प्लेज एज ए की इंस्ट्रूमेंट इन रिसर्च process. Third thing, multiple sources of data. In qualitative research, typically gather multiple forms of data. We are using various types of techniques like interviews, observation, documents, and audiovisual information. So, in various or multiple sources of data, the qualitative research gather. Then in qualitative research, inductive and deductive data analysis, both we are using both type of data analysis technique. Inductive जो कि specific to general or particular to general, and deductive general to particular. ये दो टाइप का डाटा एनालिसिस हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। देन emergent design. One of the major features or characteristics of qualitative research is emergent design. It means the researcher can change his plan according to the need of the environment, according to the need of the research. It is not like to any strict rule, it is flexible in nature. जैसे कि अब देखिए, दिस मीन्स दैट द इनिशियल प्लान फॉर रिसर्च कैन नॉट बी टाइटली प्रिस्क्राइब्ड एंड सम ऑफ all phases of the process may be changed or shift after the researcher enters the field and begins to collect the
data. So emergent design is also one of the features of qualitative research. Then reflexivity. Reflexivity means giving the reflection of researcher. Then holistic account. Here the qualitative researcher develops a complex picture of the problem or issue under the study. Sorry. Identify the many factor involved in a situation. तो क्या करते हैं ना, सारी होलिस्टिकली हम लोग सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं. Now comes to question number 2, that with reference to data collection, triangulation means. So friends, in qualitative research there is one term, that is triangulation. So what does it mean? Generally in this question क्या पूछा गया है हमको कि ट्रायंगुलेशन का मीनिंग क्या है. तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन 1 कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम 3 सोर्स ओनली. ऑप्शन 2 कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम 2 or more than 2 source using varied methods. Option 3 using quantitative and qualitative methods of data collection. Option 4 using primary and secondary source of data collection. तो फ्रेंड्स जनरली ट्रायंगुलेशन का मीनिंग ये होता है कि कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम 2 or more than sources. 2 or more than 2 sources. अरे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगुलेशन है, जैसे कि डाटा ट्रायंगुलेशन, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन. सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन 2. Okay. Next, question number 3. Following is a list of topics suggested for research. Which among them is example of experimental research? Which among is an the example of experimental research? Experimental research का क्वेश्चन है. तो जनरली हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं ना, इफेक्ट चेक करते हैं. अगर आप ये क्वेश्चन को खुद करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं. तो देखिए ऑप्शन ए स्टडिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ टीचर्स इन्वॉल्व्ड इन एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम. ऑप्शन बी स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ मीडिया कवरेज ऑन द व्यूज रिलेटेड टू द रीटेस्ट ऑफ ए पेपर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 6. Option C studying the changes in the recommendation of various education policy since independence. Option D giving detailed account of student teacher relations in a rural primary school of Uttaranchal. So क्या करते हैं ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे कि आप जानते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग इफेक्ट चेक करते हैं. तो आंसर विल बी ऑप्शन B. Then comes to the question number 4. Which among the following statement is not appropriate for research? एक जनरल क्वेश्चन है. इस जनरल क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में. तो हम लोग को सभी क्वेश्चन को तैयारी करना चाहिए. तो देखिए ऑप्शन 1 रिसर्च investigation are based on personal opinions. Research is a systematic. Option 2 research is systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical proposition. Option 3 research is scientific in nature. Option 4 results of a research are open to public scrutiny by fellow professionals. तो generally in research research is scientific in nature, we know. Research is a systematic, control, empirical and critical investigation of hypothetical position. ये भी ठीक है. तो 2, 3 ठीक है. और ऑप्शन 4 रिजल्ट ऑफ ए रिसर्च आर ओपन टू पब्लिक स्क्रूटिनी, ये भी ठीक है. तो यहाँ पे बच गया ऑप्शन 1. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1. Then question number 5, that directional hypothesis. This question is based on the directional hypothesis.
So friends, what is directional hypothesis? A directional hypothesis is a hypothesis which make prediction about the relationship between two variables. It make prediction, exact prediction. It made exact prediction about the relationship between two variables. But in non-directional hypothesis, there is no such. We cannot make prediction about the relationship. Then comes to the question. Directional hypothesis in research is stated only when past research or theory suggests that the findings may go in a particular direction. बिल्कुल सही है. Then outcome of the research is easily predictable. ये हम नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा. Then comes to third eye. There is direct relation between variables. ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. In hypothesis testing, types 1 error. So friends, there is a little bit confusion between type 1 error and type 2 error. काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि टाइप्स 1 एरर क्या होता है, टाइप्स 2 एरर क्या होता है. पता होता है तब भी हम भूल जाते हैं कि क्योंकि ये रिलेटेड है, याद नहीं रहता है टाइप 1. तो मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियर से समझा दूंगा. टाइप एरर आप कभी भी भूलिएगा मत. देन तो क्या होता है ना, टाइप 1 एरर क्या होता है, तो हम पहले समझेंगे टाइप 1 एरर होता है क्या है एंड टाइप 2 एरर क्या होता है. इस डायग्राम के देखिए टेबल, दिस टाइप्स ऑफ एरर. तो कब टाइप्स ऑफ एरर होता है, अगर रिसर्चर ने एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, then it becomes types 1 error. When the true null hypothesis is rejected by the researcher, then it is called as types 1 error. फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो वो करेक्ट है, सही है. देन comes to the type 2 error. If the researcher accepted false null hypothesis, then it becomes types 2 error. याद एक टेबल के हिसाब से इसको माइंड में रखिए कि टाइप्स ऑफ एरर होता है क्या है. Then comes to the question. Types 1 error क्या होता है, when the null hypothesis is rejected even it is true. Okay. Question number 7. A researcher wishes to study the shared patterns. See this, shared patterns of a group of individual. So here तो शेयर्ड पैटर्न्स अब कौन सा रिसर्च में आता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ स्टडी वुड बी, तो विदाउट एनी डाउट दिस इज एथनोग्राफिक रिसर्च, क्योंकि एथनोग्राफिक रिसर्च में ही शेयर्ड पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का स्टडी किया जाता है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनियस इन नेचर. Question number 8. When the population is heterogeneous, what should be the proper method of sampling? So heterogeneous in terms of age, educational level, interest etc. So जब population heterogeneous होता है तब कौन सा सैम्पलिंग यूज किया जाता है, पर्पजिव नहीं होगा, क्लस्टर भी नहीं होगा, रैंडम भी नहीं होगा. तो इसका सही आंसर क्या होगा, stratified sampling. So when the population is heterogeneous, stratified and random will be the proper method of sampling. Then question number 9.
That power of the test of significance means test of significance means the probability of what? Incorrect acceptance of the null hypothesis, correct acceptance of the null hypothesis, incorrect rejection of the null hypothesis, then correct rejection of the null hypothesis. So the test of significance means the correct rejection of the null hypothesis. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. Then last question of this video, what does F ratio means? आप लोगों ने अनोभा पढ़ा होगा, अनोभा अनकोभा. तो इसमें क्या है, एक टर्म है जैसे कि SST, SSA, SSW, SSA. तो इसमें एक एफ रेशियो होता है. सॉरी, रेशियन गलती से लिखा हो गया है, ये रेशियो है, एफ रेशियो. एफ रेशियो क्या होता है ना, इट इज ए रेशियो बिटवीन मीन ऑफ SSA एंड मीन SSW. देन इसका सही आंसर ऑप्शन डी. तो फ्रेंड्स, ये थी पूरा 10 क्वेश्चन जो कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया. तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना है. थैंक यू.